हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोडो सर क्लासेस। ये गेट 2026 का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शन दिया गया है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन इजी है, बट इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि कब एक टू वेरिएबल फंक्शन को हम लोग ग्लोबली इन्वर्टेबल कह सकते हैं और लोकली इन्वर्टेबल कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। Okay, so given the function is fxy equals to e to the power x cos y and e to the power x sin y. Okay, so f is 1 to 1. So पहले ऑप्शन देखें. Okay, so given fx, fx is e to the power x cos y and e to the power x sin y. Okay, so this is fx not, this is fx comma y. Okay, so हम लोग एक्स को कांस्टेंट रखे। सपोज हम लोग 1 let 1 pi. Okay, then what will be the value? It's give e cos pi and another is e sin pi. Okay, so this gives cos pi means -1, so minus e comma 0. So we will get f1 pi is minus e comma 0. Okay, then again if we put f1 3 pi, then again we see that this gives e cos 3 pi comma e sin 3 pi. So what will be the expression? Final expression is minus e comma 0. So we see that therefore f of 1 pi is equals to f of 1 3 pi. So this implies f is not 1 1. F is not 1 1. Okay, so f 1 1 नहीं होगा. So पहला ऑप्शन, that means option A is wrong. Okay, okay. The Jacobian of f is negative. So we will find the Jacobian. So Jacobian क्या होगा? So Jacobian is, suppose हम लोग का फंक्शन दिया गया है f x, y equals to f1 f2. हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, which is e to the power x cos y and e to the power x sin y. तो जैकोबियन कैसे निकालते हैं? जैकोबियन इज डेल f1 बाई डेल x डेल f1 बाई डेल y, देन डेल f1 डेल f2 बाई डेल x एंड डेल f2 बाई डेल y. ओके, दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स. सो अगर कैलकुलेट करें हम लोग को क्या मिलेगा? डेल f1 मीन्स e to the power x cos y. So del f1 by del x means e to the power x cos y, and it will give e to the power x sin y. And del f2 by del x means e to the power x sin y and e to the power x cos y. Okay, so this is the Jacobian matrix. अगर हम Jacobian matrix का डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ e to the power x cos y and minus e to the power x sin y and e to the power x sin y and e to the power x cos y. So what will be the expression? It's e to the power 2x cos square y plus e to the power 2x sin square y. Okay, so we will get, therefore determinant of Jacobian is e to the power 2x, which is greater than 0, not equal to 0 obviously. So अब देखते हैं. तो Jacobian of f is negative. This is wrong because we know that we see that the Jacobian is e to the power 2x. This is greater than 0. Okay,
Now f is locally invertible. Yes, as Jacobian is not equal to 0, so हम लोग नीचे लिखते हैं. So as Jacobian is not equal to 0, so given fxy is locally invertible near a small neighborhood of xy, but as f is not 1 1, hence f is not globally invertible. Globally invertible. That means अगर जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे कि दैट फंक्शन is locally invertible. That means near a small neighborhood of xy, the function is invertible. But globally invertible होने के लिए हम लोग को locally invertible भी होना पड़ेगा प्लस फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा. बट यहाँ पर तो फंक्शन 1 1 नहीं है, बिकॉज हम लोग प्रूफ किए हैं कि देखिए एजे. So if it's not 1 1, that means the function is locally invertible rather globally invertible. So option C is correct and D is false. So हम लोग को A false मिला, B false मिला. So answer C is the correct answer. Thank you.